Well, hello everyone. Welcome to this live of HW News English as well as HW News Hindi. In this particular live, we are going to talk about the latest update on the Russia and Ukraine war. This is the third day of the war that has been going on since Russia started invasion of Ukraine. Russian army, Russian military, Russian troops entered the borders of Ukraine a few days after they recognized two regions, Luhansk region and the other region, which is together called as Donbass. This region they called as independent. They declared them as independent, and after that, the Russian army has now entered Ukraine, and it has been 3 days since this invasion has started. So, what is the update on the third day? Hundreds of students, thousands of Indian students are still stranded there. Millions of people are trying to flee the country. They are going to other neighboring countries, including Poland. Some are going to Romania. Some are entering Hungary. So all these developments are happening. Russia has already said that it does not want to escalate the situation and it does not want to capture the Ukrainian area. However, the military assault, the military attack on Ukraine from Russia's side continues. Today, there was a resolution in United Nations Security Council, but the resolution that was asking the Russian President Vladimir Putin to end the military attack, the invasion of Ukraine. However, that particular UN resolution was vetoed by the Russia in UNSC. India abstained from the voting. China also abstained from the voting, and United Arab Emirates also abstained from the voting. So 11 nations together voted in favor of the resolution. Russia vetoed it, and three nations, including India, they abstained from voting on that particular resolution. So this happened today. There are also many more updates from the ground that we will be talking about today, and I am joined by my colleagues from Hindi. We have Vinay Mishra with us, and my colleague Tejas is also joining us today to discuss about the situation. But let me just first show you some of the visuals from the ground, what exactly is happening, because Russia has been claiming that it is only targeting the military bases in Ukraine, but some reports from Ukraine are also suggesting that rockets launched by uh, Russian side are also hitting residential areas in Ukraine. And according to latest update, according to UK Defense Intelligence, apparently the Russian military, the Russian troops are just 30 kilometers away from the center of the capital city of Kyiv, and they are trying to enter the capital city. However, the forces of Ukraine are holding the capital, and they have said that the capital situation is under control, and the capital is still under control of Ukrainian forces. But let me just show you some of the visuals that came from Kyiv today. A residential building was hit in Kyiv, and as you can see, the rocket went off and hit the residential building. You can see in the visuals that how the rocket actually hits the residential building. That happened. A residential building was hit by a rocket. The rocket allegedly launched by the Russian military. Now, there are reports that a zoo was also targeted. There was a military base near a zoo, and that particular military base was targeted, and there was a major fire in that particular region. As you can see, we can see the fire here, the flames coming out, the smoke coming out of the fire, and this was near a zoo. It is not yet reported whether the zoo, any animals in the zoo have been affected or were killed, but there are reports that there was a military area near a zoo in Kiev, and that area was attacked by Russian bombs. There are some more visuals to show you the extent of damage that was caused to a residential building due to the attack by Russian rocket. This is the extent of damage, as you can see on your screen. These are the visuals coming out of Ukraine. Some other visuals of the same building, multi-story building, and multiple apartments were hit, and the debris, you can see it is strewn all around on the road down there. Uh,
All right, so this is one another visual which shows that a tank, a Russian tank, crushed a civilian car under it, and this is the video of that particular incident. There was an elderly man who was inside the car. However, he has survived this horrific crash. A very horrific video that came out from Russia. This is another video that shows what happened when the car was crashed under the tank of Russia. The elderly man, however, later on, he was rescued and he was taken to hospital. Meanwhile, the Ukrainian president has been issuing video messages for his citizens. He has said that he will not flee his country. In his message, he said that the NATO countries, the US especially, offered him to fly out of Ukraine, to fly out of Kyiv. However, Zelensky has said that he will not leave his country and he will stand there and he will fight. He has said that instead of flying me out, give me military assistance. And I think the NATO has been working on it. They have assured that they will support Ukraine and they will provide military assistance to them. He has issued two such videos. One, this video was of last night. There is another video that he issued this morning to tell the world, to give out a message that everything is under control. And he has asked people, asked the civilians of Ukraine to come out in large numbers and support the Ukrainian government, the Ukrainian resistance to the Russian invasion. I think let us also talk about a little about what is happening in Russia and what is happening in Ukraine and what is the situation. Vinay, क्या लग रहा है आपको इस वक्त? आपके पास कुछ अपडेट है यूक्रेन से? क्या कुछ हो रहा जी, है वहां? जी, बिल्कुल। अभी जो ताज़ा यूक्रेन से अपडेट ये आ रहा है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मतलब ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने अभी-अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे बातचीत की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से अवगत कराया कि जो रशिया है, उनकी मतलब क्रूरता वहाँ पर जारी है और लगभग उन्होंने बताया कि 1 लाख मतलब फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो इनके लैंड पर है और उन्होंने भारत से मांग की है राजनीतिक सहायता की, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट की मांग की है ताकि जो अग्रेसर हैं उन्हें रोका जा सके। तो ये बात उन्होंने ट्वीट करके जानकारी सामने दी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रूस ने क्या किया है कि जो रूस के जो मतलब एम्बेसडर हैं इंडिया में, मतलब जो उन्होंने एम्बेसी की ओर से ट्वीट आया है रूस के कि जो इंडिया का जो रुख रहा है, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से भारत ने वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखा, उन्होंने वोट नहीं करने का फैसला किया रूस के खिलाफ, तो इसकी सराहना की गई है। तो ये जो ताजा अपडेट है वे हमारे सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से एक जो देश है जिस पर इस वक्त मुसीबत है, उन्होंने फिलहाल कोई मिलिट्री असिस्टेंस की मांग नहीं की है, बाकी और किसी चीज की मांग नहीं की है, लेकिन जो काम उनको लगता है कि भारत ये कर सकता है कि उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे एक वर्ल्ड लीडर हैं, तो अगर वे रिक्वेस्ट करें या फिर बातचीत करके एक रास्ता निकाले कि जो ये रूस ने आक्रामकता का रुख अख्तियार किया हुआ है, इसे छोड़े, बातचीत के रास्ते पे आए और इस समस्या का समाधान निकाले। तो ये अभी ताजा अपडेट है कि उन्होंने खुद, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। वहीं दूसरी ओर रूस इस भारत का स्टैंड रहा है यूएनएससी की वोटिंग प्रक्रिया में, उसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। जी, हालांकि यूक्रेन की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, यहाँ के जो यूक्रेन के जो एनवॉय है इंडिया में, आइगोर पुलिखा, उन्होंने भी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने भी कहा था कि भारत से हमें अपेक्षा है, भारत जो है एक ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और भारत से हम अपेक्षा करते हैं कि अगर वो पुतिन से बात करे, क्योंकि भारत को काफी ऐसा कंसिडर किया जाता है कि भारत जो है काफी क्लोज है रशिया के, तो एक तरीके से क्लोजनेस होने के नाते उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है उनको पुतिन से बात करनी चाहिए। शायद पुतिन अभी बाकी लीडर्स की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अगर भारत कोशिश करे
तो पुतिन बात मान सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोन पर व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, रशियन प्रेसिडेंट से बात की थी, और रशियन प्रेसिडेंट ने उन्हें ब्रीफ किया था कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, जो पीएमओ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की है, ताकि ये जो सिचुएशन है वो और खराब ना हो, और जितना ज्यादा हो सके डिप्लोमेटिक अगर तरीका अपनाए ये सिचुएशन सॉल्व करने का, उसके लिए पहल की थी। तो ये इंडिया की तरफ से एक बात कही गई थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि इस वक्त यूक्रेन में क्या हो रहा है, पोलैंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि कम से कम 1 लाख लोग जो है यूक्रेन से निकलकर वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, वो पोलैंड में है अभी। कई सारे लोग जो है वो बंकर्स में छुप रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जो है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, वहां पे छुप रहे हैं, ताकि ये जो रशिया के बम है वो उन्हें अफेक्ट ना करे या फिर उनकी जान ना जाए। तो जान बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या बंकर में अभी रुक रहे हैं। कई सारे जो भारतीय छात्र हैं वो भी इसी तरीके से फंसे हुए हैं। करीब करीब 18,000 के करीब जो भारतीय छात्र हैं वहां पे फंसे हुए हैं। उनके बारे में दो लोगों से हमने परसों भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि तब तक वेस्टर्न रीजन जो है वहां पे रशिया का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे निकलते जा रहे हैं, उनको भी ये लग रहा था कि हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, और कहीं ना कहीं रशिया का जो हमला है, अगर रशिया के जो सेना है वो अगर अंदर आती है तो वो वेस्ट की तरफ भी बढ़ सकती है, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे कई सारे जो है स्टूडेंट्स है, खार्किव में है, कीव में है, जो ईस्टर्न रीजन में आता है, वहां पे फंसे हुए हैं। Tejas, what do you say? What is the update in this regard, especially with respect to Indian students? Yes, Ati, as you told, there are some around 15,000 Indian students stuck in Ukraine at this moment. There is one flight that is operating from. Is there some issue with the voice? So there is one plane that is managed by the Air India from Hungarian capital of Budapest. So they are evacuating some 470 students today. It is supposed to land today night in Mumbai, I guess. But there are 15,000 students. The rough number is 15,000 who are stuck in Ukraine at this moment. Right, like you told, the major part of the war, the major part of the fight, which is happening in the eastern part of the Ukraine. So the western part, which borders with Poland, Hungary, Romania, so there is not much of war or fighting or shelling as such happening in the western part of the country. So the Indian embassy in Ukraine has told Indians living in Ukraine that they should travel to the western part, but they have also released some Google forms so that the nationals stuck in Ukraine could fill those form and can intimate the embassy in India, that embassy in Ukraine, that they are traveling towards the western side of the country, so that they could be evacuated and then transported either to the capital of Romania, which is Bucharest, or the capital of the Hungary, which is Budapest. So from Bucharest and Budapest, India is supposed to carry more evacuation flights from there. The first flight after the war was declared is coming to India today. Earlier, there was also one flight, but it was cancelled because the Ukrainian airspace has been shut down. It has been closed since February 24th morning. So now the planning is to bring all Indian nationals towards the western border and then manage commute for them from the border post to the capitals of Romania and Hungary. I'll just tell some of the names of the borders. It is very difficult to pronounce, so pardon me for that. But Poland border, Indian embassy in Ukraine has told Indian citizens to travel to Sheni Medica crossing at the Poland border, and also Kharkovich crossing if you are traveling through your own vehicle. If you are walking, then have to go to Sheni Medica crossing. As we must have seen the visuals coming, there are Indian students walking since yesterday towards the Poland border. There is Hungarian border, Chop Jauni and Uza Road and KPP Taisa, which are the crossings at the Hungarian border from where Indian students could be picked up by the embassies in Hungary. And there is Romanian border, which is Forban Siret and Chernivets. These are the crossing points from where the Indian embassy in Romania
will try to manage the commute for the students from the border to the capital of Romania, and then they will be flied out from there to India. So that is the current update that we are getting. MEA has also set up a 24/7 control room in Ukraine, so Indian citizens stuck there could contact to them. The EMA has also told the Indian nationals to not travel to western borders without intimating the embassy, because as you told, Poland has said that there are around 1 lakh people at the border. So the man management has also become very difficult for the neighboring countries of Ukraine, because there is so much of outflux, not only Indian students but also other nationals and Ukrainian nationals as well, leaving the war-torn country. So that's the update for now. इस बात की भी चर्चा हमारे देश में काफी ज्यादा हो रही थी कि भारत ने जो यूक्रेन में इस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, यहाँ पर भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए था, या रशिया के पक्ष में तो बहुत कम ही देश के लोगों का मानना है कि रूस का पक्ष लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश है यूक्रेन, इस पर हमला हुआ है, इस पर आक्रमण हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भारत ने क्यों आखिरकार मतलब वोटिंग नहीं की, लेकिन भारत की ओर से एक जो बयान जारी किया गया है उस पर ये राय रखी गई है और बताया गया है, वजह बताए गए हैं कि किन वजहों से मतलब भारत ने मतदान नहीं करने का विकल्प चुना। तो जो वजह बताए हैं मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ कि भारत ने किन वजहों को बताते हुए पूरे इस जो मतदान की प्रक्रिया थी इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो जो पहला वजह बताया गया है वो यह है कि यूक्रेन में हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम से भारत बेहद ही विचलित है। ये कहा गया है वजह बताने में कि भारत इससे विचलित है। फिर भारत की ओर से कहा गया है कि हम अपील करते हैं कि हिंसा और दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जाएं। आगे वजह में ये भी कहा गया है कि इंसानी जिंदगी की कीमत पर कभी कोई हल नहीं निकाला जा सकता। ये सीधे तौर पर रूस को कहा गया है कि जो एक इंसान की जिंदगी है उसकी कीमत पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता। भारत ने कहा है कि हम यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। आगे कहा गया है कि समसामयिक वैश्विक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अलग अलग देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। सभी सदस्य देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है, ऐसा भारत ने कहा है। मतभेद और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत एकमात्र जरिया है, चाहे ये रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। तो भारत का सबसे ज्यादा जो जोर रहा है वो ये रहा है कि अगर आप मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं ये एक तरीका नहीं है, लेकिन सबसे सही तरीका भारत ने बताया है कि आप बातचीत के रास्ते से कोई भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि भारत ये भी मानता है कि बातचीत का जो तरीका होता है वो आसान नहीं होता, इससे जल्दी समाधान निकलने की संभावना भी कम नहीं होती, लेकिन फिर भी भारत का मानना है कि सबसे सही तरीका यही होता है। भारत ने इस बात के लिए खेद व्यक्त किया है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है। जो कूटनीति का रास्ता है वो यहाँ पर छोड़ दिया गया है और भारत चाहता है कि वापस इस रास्ते पर लौटा जाए। और भारत ने अंत में कहा है कि यही सब वजह हैं जिनकी वजह से उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। और अमेरिका ने भी यहाँ पर मतलब जो ये प्रक्रिया हुई थी, मतदान की प्रक्रिया, यहाँ पर अमेरिका जो पहले से ही करता आ रहा है उसने फिर से एक बार आलोचना की है कि जो रूस इस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी तेजस सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने क्या थोड़ी देर नहीं कर दी अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि भारत के सामने इस तरीके से मतलब काफी चीजें सामने आने लगी थी कि ये युद्ध की ओर दोनों देश बढ़ रहे हैं। जी विनय देखिए, जो बिल्डअप रशियन आर्मी ने यूक्रेन की बॉर्डर पे करके रखा हुआ है, इट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 2 मंथ्स। शुरुआत में जो पुतिन है, जो राष्ट्रपति है रशिया की, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल या एक्सरसाइज के तहत किया जा रहा है और रशिया का कुछ इंटेंशन नहीं है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करे। सो शुरुआती दिनों में सभी सभी जो कंट्रीज थे उनको ऐसा लगा था कि पुतिन विल नॉट इन्वेड यूक्रेन। तो उस हिसाब से कुछ सर्टेनिटी एज सच थी नहीं ये कॉन्टेक्स्ट में कि वो इन्वेड करेंगे या नहीं करेंगे।
जब लगने लगा दुनिया में सभी, जब यूएस ने वार्निंग दिया कि उनको लगता है कि ये थ्रेट बहुत इमिनेंट है कि रशिया यूक्रेन को कर सकता है इन्वेड किसी भी मोमेंट पे, तभी अचानक सबको रियलाइज हुआ जो ग्रेविटी है जो सिचुएशन की, कितना सीरियस सिचुएशन हो सकता है अगर पुतिन 1,30,000 ट्रूप्स अगर उन्होंने यूक्रेन की बॉर्डर पे खड़े किए हैं, तो ये एक बहुत फुल फ्लेज वॉर में स्पाइरल आउट हो सकता है अगर रशिया इन्वेड करे तो। और उसके बाद फिर सारी कंट्रीज के, और जो जो वहां के दूसरे कंट्रीज के नेशनल्स भी यूक्रेन में फंसे हुए थे, हमने देखा होगा कि उनकी लाइफ एज यूजुअल चल रहा था, मतलब बिकॉज द कंट्री इज सो यूज्ड टू, सिंस 2014 रशिया एंड यूक्रेन आर इनडायरेक्टली एट वॉर विद ईच अदर, सो दे आर, उनको आदत है इस सब चीजों की। उन्होंने शेलिंग देखी है, उन्होंने बॉम्बिंग देखा है इससे पहले भी, तो उन्हें लगा था कि ये यूजुअल है और ये शायद बदल जाएगा थोड़े दिन में, बट हमें वो आसार दिखते नजर नहीं आए। रशिया के जो राष्ट्रपति है उन्होंने वॉर अनाउंस कर दिया यूक्रेन पे, और उसके बाद जो काफी 2-3 दिन में ही जो सिचुएशन जो स्पाइरल आउट हुआ है, जो कंट्रोल से बाहर गया है, उसके बाद फिर कंट्रीज को स्क्रैम्बल करना पड़ा अपने सिटीजन्स के लिए मैनेज करने के लिए। और मुझे लगता है यही वजह रही रहेगी कि भारत पहले वॉर शुरू होने के पहले उनके सिटीजन्स को नहीं ला पाया। माफ कीजिए अगर आपका आवाज शायद सुनाई नहीं दिया, आपने जो क्वेश्चन पूछा, क्या आप टॉपिक रिपीट कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरा माइक म्यूट पे था, लेकिन हाँ, मैंने आपसे ये पूछा था कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड जो दूसरे देशों में पहले जब ऐसा देखा गया कि वहां पर भारतीय फंसे रहे हों, तो भारत ने काफी अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से भारतीयों को वहां से जल्दी निकालने में उनको कामयाबी मिली थी। यूक्रेन में कहा जाता है कि 20,000 के आसपास भारतीय हैं और कुछ भारतीय देश भारत में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना समय लग सकता है सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने में? क्या 6-8 दिन लगेंगे या फिर महीनों का समय लग सकता है? एक अंदाजा जो ट्रैक जो जो सिचुएशन है वो हिसाब से जो बॉर्डर है वो पोलैंड का बॉर्डर है, हंगेरियन या रोमानियन बॉर्डर है, तो वहां से ऐसे दे आर नॉट पोरस बॉर्डर, so there are just multiple crossing from where these countries are allowed for the other nationals to cross from Ukraine. तो जो क्रॉसिंग है वो भी बहुत कम है, स्पेसिफिक क्रॉसिंग है जहाँ पे लोग क्रॉस कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो और आगे आगे आपने पोलैंड का स्टेटमेंट अगर देखा, अगर पोलैंड को एक क्रॉसिंग पे अगर 1 लाख लोग, एक बॉर्डर पे अगर 1 लाख लोग है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तीनों बॉर्डर मिला के अभी उन लोगों को निकालना। और आज जो इंडिया का फ्लाइट आ रहा है, इट इज कैरिंग ओनली 470 पीपल। So even if you think there are 1 or 2 flights daily run by India from Bucharest or Budapest from Romanian and Hungarian capital, फिर भी एक दिन में हम शायद अगर 1,000 स्टूडेंट्स भी ला पाए तो it will also take 15 days for us to bring back all the people. जी विनय। Vinay, I think you're on mute. हाँ, मैं ये कह रहा था कि पूरे दुनिया भर में रूस की निंदा हो रही है जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है। रूस में भी बहुत सारे जगहों पे देखा गया है, कई शहरों में, मतलब 50 से अधिक शहरों में वहां पर प्रदर्शन हो रहा है जो पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन है, पुतिन की सरकार है, उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि जो दुनिया की बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं, पुतिन को रोक पा रहे हैं यूक्रेन पर धावा बोलने से, क्या रूस के नागरिक पुतिन को रोक सकते हैं, उन पर दबाव बनाया जा सकता है? जी, ये मेरे लिए सवाल है ना? ये आरती से मैंने पूछा था कि जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जी,
विनय देखिए काफी सारी जगह पे जो है इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. द वे रशिया हैज बीन इन्वेडिंग यूक्रेन फॉर द लास्ट 3 days, it has had a global impact and it has received a global blowback, and we can see that not only the world leaders, especially those 11 countries in the UNSC, but also the people of Russia. We have also seen that clip. I think we all have seen that clip of Russian tennis player going out and writing on the camera while he was after his match in United Arab Emirates. He went on camera. He wrote on the camera that no war, please. So this is the response from the Russian people as well. There have been reports of people coming out in St. Petersburg, which is also the hometown of Vladimir Putin, and people are coming out and asking the government, asking their president to not, invade Ukraine and stop the war immediately. Also, from different parts of the world, there have been protests. There have been protests in London. In fact, there was a protest in Goa also. Some Ukrainian nationals who were in Goa, they held the Ukraine flag, and they protested against the Russian invasion of Ukraine. In New York, in Washington, there were protests. यूक्रेन में तो हालांकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो चल ही रहा है. एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें वहां के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनके कहने पर काफी ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने हथियार उठा ले हैं. उन्होंने प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि जो लोग हमें जुड़ना चाहते हैं रशिया के खिलाफ, द रेजिस्टेंस दैट दे आर पुटिंग अप, he has said whoever wants to join us, we will provide them with arms. So people are also taking up arms. There has been a tweet by one of the MPs who has said that now she has also taken Kalashnikov, and she has shared a picture with Kalashnikov, telling the people that now she has also taken up the arms against the Russian invasion. So a lot of blowback Russia is receiving. However, it seems that Russia is not even bothered by this resistance, whether the resistance comes from the Ukrainian people, Ukrainian leaders. However, one thing that particularly everybody is talking about, and I think it is the highlight of this entire incident, is looking at the size of Ukraine and size of Russia. And the size of Russian military and Ukrainian military, the way Ukraine is fighting and standing up to Russia is something that everybody is talking about. The way Ukraine has not put down its arms, they are saying that we will fight it out, whether the NATO alliance partners are there to back them or not. It is their fight, and they are going to fight it out. So this is what broadly the situation is with regards to resistance. I think there are two more updates, very important updates coming out, and I want to a little bit talk about them. uh, okay. All right. So the first update is from Poland. The Poland team has refused to play 2022 World Cup playoff against Russia, and the statement was given out by Polish Federation. So the Poland team has refused to play the 2022 World Cup playoff against Russia. Now, this was the blowback from the sports arena, but I think there have been talks of sanctions against Russia since the day Russia invaded Ukraine, and these sanctions were put on Russia by alliance partners of United States, and these nations are United States, European Union, United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand. All these nations together have put some sanctions on Russia and Russian businesses. So let me just take you through some of the sanctions in different arenas. In finance, particularly, top 10 Russian financial institutions representing nearly 80% of Russia's banking sector now are under US restrictions. There is a bank called SBER Bank. I don't know what exactly it is pronounced, but this is the name that has been written on it. SBER Bank has been banned from conducting transactions through the US CAPTA system. VTB and three other banks hit with full blocking sanctions, meaning all US held assets will be frozen. Now, other key industries, if you look at them, then oil and gas is one of the key industries. Gazprom's oil and natural gas units cut off from Western credit markets. EU exports has banned
on equipment and tech for refinery upgrades. If you look at defense and aerospace, then exports of key high-tech goods have been cut off. It includes semiconductors, it includes computers, telecoms, information security, lasers, and sensors as well. In aviation industry, the EU has banned aircraft and aviation parts, and UK particularly has banned Aeroflot from using British airspace from February 24th, and Russian private jets from February 25th. Now there are some mixed sanctions. Canadian export has permit for goods worth 5,550 millions in aerospace, IT, and minings have been cancelled. EU has also agreed to freeze the European assets of Putin and the finance minister Sergei Lavrov. US and Canada have sanctioned Putin and Lavrov. Personal assets of dozens of other officials from Russia have been frozen. Canada has sanctioned 58 individuals and entities. Australia on February 26th added 8 oligarchs and 339 MPs from Russia to their list of sanctioned individuals. If you look at the football, Champions League final has been taken away from St. Petersburg and it has been moved to Paris. Russian Grand Prix Formula One race has been cancelled. World Cup events in Russia have been cancelled, and Russia has been banned from a song contest. So these are the kind of blowbacks that Russia has been receiving. These are the sanctions in brief that I talked about. I think there is one video that we have received, and it is of Indian student. Let us also look at that video and see what the Indian students there are going through. ये हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभालें? दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? Well, so this was the video. This video was shared on Twitter. One student who has been stuck in Ukraine, he has shared this video and he is desperately seeking for help. Especially what exactly happening is, since there is no transportation, a lot of people have started walking towards the bordering area on their foot, and they have been walking for days now. For 2 days, people have been walking with no food, with no water. We have seen some visuals coming in from the underground metro stations and bunkers where Indian students are taking shelter there. So these students are saying that they have to travel to almost 20 hours, and so that they will reach the bordering areas, from where they will have to cross the border, and then they will have to fill the forms, they will have the due diligence to complete, and then they will be allowed to get on the flight. So this is their problem, and they have been saying that they have no connection. There has been no communication with the embassy staff as well. So there are some students who are actually got in touch with the embassy officials. The embassy has been able to
reach out to them, but there are some students who are still stuck and they have no communication with them. विनय, आप क्या बता सकते हैं और क्या अपडेट आज के दिन में रशिया में हुआ है? रशिया में तो जो प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं, यूक्रेन में जिस तरीके से कई धमाके हुए हैं, सब कुछ है। भारत से एक अपडेट ये आ रहा है कि जैसे अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, तो भारत की ओर से जो ऑफिशियल एक रिलीज है वो जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मतलब भारत की ओर से अपने जो डीप कंसर्न्स है उसको कन्वे किया है, और जो वहां पर यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं, जो स्टूडेंट फंसे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। और उन्होंने जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज हैं उनसे मतलब ये उम्मीद जताया है कि जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकाला जाए। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी मतलब अपनी एंग्विश व्यक्त की है जो वहां पर लोग मारे गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अगर यूक्रेन की बात की जाए तो वहां पर जो एक आंकड़े आए थे कि अब तक यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो लगभग 200 के करीब लोग वो ये मर चुके हैं, वहां पर उनकी मौत हो चुकी है। जो धमाके हुए हैं, जो अटैक हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, जो रशिया की सेना कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो रिलीज जारी हुआ है उसमें ये बात कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है, साथ ही इस पर दुख जताया है जिस तरीके से वहां पर ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें लोगों की मौत हुई है। और उन्होंने साथ ही इस बात की मतलब मांग की है कि जो ये चल रहा है वो जल्द से जल्द थम जाए और जो बातचीत है वो एक बार फिर से मतलब रास्ते पर आ जाए। और उन्होंने अपनी ये भी इच्छा जाहिर की है कि भारत जो शांति के लिए अपना योगदान करने के लिए वो तत्पर है ताकि जो शांति है वो बहाल हो जाए। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फिलहाल कहा गया है और ये लेटेस्ट अपडेट फिलहाल इस समय हमारे सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है इसमें भारत की भी मतलब बहुत सारी चिंताएं हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कई चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा आपने अभी एक वीडियो दिखाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। और फिलहाल अगर रूस की बात करें तो रूस में तो वहां पे मतलब इस तरीके से माहौल है कि जो वहां पर वहां के कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो वे और भी इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे बातचीत तो पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। और कुछ वहां के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मतलब बातचीत के सारे रास्ते अब बंद करने का समय आ चुका है। तो मतलब वहां पर एक वर्ग है जो चाहता है कि ये युद्ध और आगे बढ़े। और इस तरीके से वहां पर बहुत सारे लोग तो जैसे हमने देखा कि कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरीके की मांग भी कर रहे हैं कि इसको और एस्केलेट करना चाहिए। रशिया से एक खबर ये भी आ रही है कि रशिया ने जो है वहां के लोकल मीडिया को है एक वार्निंग दी है यूक्रेन का जो वॉर कवरेज है उसको लेके। दे हैव सेड दैट falsely depicting what Russia calls a special military operation in Ukraine and distributing false information will be punished. And among those sent warning letters were Eco Moskvy, a popular radio station, and a newspaper which is critical of the government, whose editor-in-chief is Dmitry Muratov. He was awarded a Nobel Peace Prize last year. They were sent this notice, and there has been the Russian media regulator has ordered the media to delete the offending information or face restricted access to their website and media resources. Now, this happened after 3 days of Russia started invading Ukraine, whereas Russia maintains that it is not an invasion. It says that it is a special military operation. This is what Russia says.
काफी सारे जो ऐसे न्यूज है वो आ रहे हैं रशिया से भी कि अंदर क्या हो रहा है। 2 एमपीज जो हैं वहां के 2 या 3 एमपीज जो है रशिया के, उन्होंने भी जिन्होंने डॉनबास को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए जो प्रस्ताव था उसके समर्थन में वो खड़े थे। उन्होंने इस वक्त कहा है कि जो यूक्रेन में रशिया की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसे कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। ये ऐसा जो एक सवाल है, एक ऐसा जो निर्णय है वो उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये सजेशन जो है वो व्लादिमीर पुतिन को दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे ही अपडेट्स हैं आज के दिन के लिए। तीसरा दिन है वॉर का, रशिया और यूक्रेन के बीच का। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं ये आए हुए हैं। जो फ्रांस है उन्होंने कहा है कि they are ready to supply weapons and military equipments, they have said, and they have not only France but there are other countries of NATO who have also agreed to provide the military assistance to Ukraine to fight the war. However, one important update is this is so bad that even Pope Francis went and met the I think a Russian or Ukrainian ambassador, and he supported the peace process. He said that there should be peace. So Pope Francis has also taken note of this situation, and he went to Ukrainian or I guess Russian ambassador and he spoke with them. So this is the broadly update regarding the Ukraine and Russia war on day 3. We will get you such more updates as the situation develops. Stay tuned to HW News for more such news. Thank you so much.